पंजाब प्रोविंस में एक सिटी है, उसमें फिर सरगोदा एक सिटी है, देन सिटी में एक गांव है, विलेज, उसका नाम मिड रांझा. सो बेसिकली वी आर फ्रॉम मिड रांझा. फिर हम ये रांझा वही जो हम गाने में बॉलीवुड ने काफी हीर रांझा, आप हीर रांझा के गांव से हैं. या इस तो वहाँ से हम इस्लामाबाद मूव हुए. Very dynamic state as well. So I come from UP and that's a very small hometown. Is in a city called Gorakhpur, which is very close to the international border of Nepal. So I grew up there. My parents were from there, and then for my education I went to different cities. I lived in Allahabad, which is now called Prayagraj. Then I've lived in Dhanbad. Then I worked in Delhi. I worked in Greater Noida, and then I came here. Hi everyone, welcome to Study Buddy. और आज इस इंटरव्यू इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं आदिल. वेलकम. थैंक यू. और इस पॉडकास्ट में बेसिकली बहुत डिटेल कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं हम. जितने स्टूडेंट्स इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़ में, यूके में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे मास्टर्स हो, पीएचडी हो, कैसे कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कमिंग टू हियर, यहाँ पे लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे कैसे चीज़ों को आप परस्यू करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, एंड हाउ इज़ योर लाइफ आफ्टर दिस. तो इस पूरी डिटेल डिस्कशन को हमारे साथ करने के लिए हमारे साथ आदिल मौजूद है यहाँ पे. आदिल इज़ अ PhD स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, एज वेल एज आदिल इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च ऑफिसर. तो आई थिंक इस कैपेसिटी में आदिल हमें एक बहुत ही डिटेल्ड इंसाइट दे सकते हैं इन सारे प्रोसेस के बारे में. So Adil, so before we get into the conversation, अगर आप हमारे ऑडियंस को ये बता सकें, what exactly is postgraduate research officer in the university? So ये एक एग्जैक्ट स्टूडेंट ऑफिसर रोल है स्टूडेंट्स यूनियन में, टू रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स, जो कि जैसे ये PGR ऑफिसर रोल है जो कि सिर्फ रिप्रेजेंट हम करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट कम्युनिटी को. सो वी हैव टीम ऑफ लाइक 8 एग्जैक्ट स्टूडेंट्स जो कि इलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं. स्टूडेंट उन्हें इलेक्ट करते हैं हर साल. और तो ये वोटिंग पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करते हैं? हाँ, बिल्कुल. अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एवरीवन. एग्जैक्टली. लेकिन हर एक का थोड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रिमिट कहते हैं वो डिफरेंट है. एटलीस्ट उनकी इंडिविजुअल ड्यूटीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जॉइंट ड्यूटीज़ जो हैं या जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सब स्टूडेंट बॉडी, जो होल स्टूडेंट बॉडी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन डिफरेंट हाई लेवल मीटिंग्स, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी लेवल मीटिंग्स, यूनिवर्सिटी सीनियर लीडरशिप टीम के साथ, या फिर उधर से नीचे आए तो फैकल्टी लेवल पे मीटिंग्स में बैठना, स्टूडेंट वॉइस को रिप्रेजेंट करना, उनके इश्यूज़ को रेज़ करना. तो PGR जो है वो सिर्फ अगर उसके इंडिविजुअल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए उनको उनके इश्यूज़ या कंसर्न्स को रेज़ करना, उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करना, एक किस्म का है स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के दरमियान लिंक. तो बेसिकली या आप एक लिंक तरह काम करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट के जो भी डिमांड्स हैं, जो भी इनकी नीड्स हैं, और ऊपर जो हायर अथॉरिटी हैं वहाँ तक पहुँचाना ताकि वो चीज़ फुलफिल हो सके. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. ओके आदिल, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि जो कोई स्टूडेंट, चाहे इंडिया हो, चाहे मैं इंडिया से, आप पाकिस्तान से हैं, तो इंडिया पाकिस्तान में भी हैं, अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग, द एस्पिरेशन ऑफ स्टडिंग इन फॉरेन कंट्रीज like UK, how important is that? मतलब एक स्टूडेंट जो सोचता है कि मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, तो वो सोच क्यों आ रही है, क्यों वो बाहर आना चाह रहे हैं? वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो उनको लग रहे हैं कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या लगता है आपको? आई थिंक इवन तुम भी, मतलब हम दोनों जो हैं वो हम बाहर से एक डिग्री कर रहे हैं, तो आई थिंक सो 2-3 रीज़न्स हम कह सकते हैं. जैसे एक तो है कि मे बी एक थॉट है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर डेवलप कंट्रीज़ में जाएं तो उनकी थोड़ा एजुकेशन सिस्टम मोर डेवलप्ड है, वो थोड़े मोर एडवांस हैं, तो उधर में भी अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट मिलेंगी. लेकिन आपको वही अगर अपॉर्चुनिटीज़ आप को लगे कि अपने कंट्रीज़ में भी हैं तो आप अपने कंट्रीज़ में भी डिग्री कर सकते हैं. तो आई थिंक एक तो वो है कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. दूसरा ये है कि आपको मे बी इन टर्म्स ऑफ आफ्टर एजुकेशन आल्सो आप वापस भी आएंगे तो आपकी वर्थ होगी कि आपने एक अच्छी जगह से एक अच्छी डिग्री की है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे प्रोसेस का पता. मतलब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो नो डाउट वी आल्सो हैव सिमिलर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक वेरी नाइस यूनिवर्सिटीज़, लेकिन
अगर उनको कंपेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ रिसर्च रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ इवन फंडिंग अगर देखी जाए, तो उनकी फंडिंग या फिर एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया या यूएस में या यूके में उनकी फंडिंग को, रिसर्च फंडिंग को अगर कंपेयर कर लें तो ह्यूज डिफरेंस है। तो उस फंडिंग की वजह से भी रिस्पॉन्स अपॉर्चुनिटीज़ में और फैसिलिटीज़ में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आई थिंक सो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है कि आप जाएंगे और इसके अलावा आप डिफरेंट लोगों से भी मिल सकते हैं, क्योंकि मे बी कुछ कंट्रीज़ में आपको वो एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं और एक क्लास में वो हैं, ताकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है। तो एटलीस्ट इधर डेवलप कंट्रीज़ में आएंगे तो आपको एटलीस्ट वो पर्सपेक्टिव, आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। डेफिनेटली, नो डाउट, वो जो आपने आइडिया बोला वो तो बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स में जो रहता ही है। और समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं हमारे एशियन कंट्रीज़ में वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जो एक अट्रैक्शन है वो भी है, कि एक एस्पिरेशन रहती है कि हाँ बाहर जाना है, बाहर की दुनिया देखनी है, वो बच्चों में तो क्या रहता ही है। लेकिन कमिंग बैक टू इट, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक जैसे बच्चे स्कूल्स अभी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो बाहर जाने की जो प्लानिंग है उन्हें अपने स्कूल से स्टार्ट करनी चाहिए, या फर्स्ट अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आप अपनी कंट्री में लीजिए, देन ट्राई फॉर हायर एजुकेशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, और जस्ट गो फॉर, लाइक इफ यू आर planning for PhD, then only go for foreign countries? Like, what do you think? What should be like the suitable thing for a student? मेरे ख्याल में, मतलब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तुम भी बताना इसके बाद, कि मेरे ख्याल से दोनों आप देख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। कभी क्या पता आपको वो ऑप्शन की तरफ जाना पड़े कि आप एक छोटी सी डिग्री अंडर ग्रेड या इवन बेसिक एजुकेशन यू कैन गेट फ्रॉम योर होम कंट्री, एंड देन यू कैन move for not only for education but maybe for job, and then decide education. So it really depends what you want to achieve. It's vary from like student to student actually. लेकिन ये है कि एक अच्छा डिसीजन आप लें अपने गोल्स को देख के, आप रश ना करें। सपोज करें आप अंडर ग्रेड के बाद भी कुछ 1-2 साल के लिए अपने कंट्री में या फिर इवन मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपको कोई डिग्री रियली करनी है, और देन यू कैन सेलेक्ट योर ऑप्शन। इवन उधर भी आप डिफरेंट कंट्रीज़ को रखें रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू वन, क्योंकि आप सपोज करें डिफरेंट कंट्रीज़ होंगे, डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट, मतलब मास्टर्स एक कंट्री से कर सकते हैं, PhD आप दूसरे कंट्री से कर सकते हैं। So I would say it really depends. What do you think? I think I think I would say कि इंडिया में मेजरली अभी जो बहुत ही एलीट क्लास है, जो बहुत ही अल्ट्रा रिच क्लास है, वो अपने बच्चों को जैसे स्कूल कंप्लीट हो रहा है दे आर सेंडिंग फॉरेन, ठीक है। लेकिन मैं एक एवरेज लेवल की बात करूँ तो एवरेज लेवल अभी भी ये है कि स्कूल कंप्लीट होने के बाद जो अपनी फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है स्टूडेंट्स जनरली वो अभी अपनी होम कंट्री में कर रहे हैं, और आई थिंक वो डिग्री करने के दौरान उनको वो एक्सपोजर मिलने लगता है, फिर उनको रियलाइजेशन होता है कि आई थिंक फॉर मोर डेवलपमेंट, फॉर मोर ग्रोथ यू नीड टू गो आउट, फिर वो मास्टर से स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर से स्टूडेंट ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन अगेन जैसा कि आपने बोला कि it's like very variable thing, depends on person to person. Yeah, I think it should depend on your goal क्या है, आपको क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से आप करें। और वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपनी कंट्री में रहना चाहते हैं, कितना जल्दी आप छोड़ के जा रहे हैं बाहर, क्योंकि वो भी बहुत बच्चों के लिए स्ट्रगल होता है, और कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत होता है, कुछ बच्चों के लिए ईजियर होता है। तो भी डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितनी ईजिली तरीके से ले रहे हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो आप अपनी मास्टर्स करने बाहर आए पहले आप, तो अगर एक बच्चा चाहे इंडिया पाकिस्तान में है, मान लीजिए अगर हम इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड की बात करें, वेस्टर्न में अंडर ग्रेजुएट कर ली है या अभी कर रहा है, एंड नाउ ही इज़ प्लानिंग टू अप्लाई टू, ठीक है अब बाहर जाएंगे पढ़ाई करने, अपनी हम मास्टर्स की तैयारी करेंगे, तो मैक्सिमम केसेस में बहुत एक्सपेंसिव होता है यूके में पढ़ना, लेकिन उतनी जो स्कॉलरशिप्स हैं जो अवेलेबल हैं ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो हाउ स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली get to that point where they have this accessibility of knowledge, like where these all scholarships are available and how they can get to know about in more details, and how they can approach. What's the basic step there? Yeah, I think it's a really important point, because अगर सपोज करें आप किसी फैमिली या किसी सर्कल से हैं जहाँ पे पहले लोग बाहर गए हुए हैं, तो then it's very easy, you'll access, you will even like get first hand experience, like okay, we have these options, you can try. But जो आपका पॉइंट है वो रियली वैलिड है कि कुछ जो कि अभी सपोज करें होल फैमिली में वो पहले हैं कि वो देख रहे हैं कि हम जा सकते हैं
और वो उनके लिए मतलब वो कैसे चेक कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इजी. इंफॉर्मेशन जो है वो तो आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे. तो आई थिंक प्लान लाइक अराउंड 6 मंथ, जैसे आपको लगे कि नेक्स्ट अगले 6 मंथ में आपकी ग्रेजुएशन है या डिग्री कंप्लीट हो रही है, और अगर आपका प्लान है कि मैंने अंडर ग्रेड के बाद मास्टर्स डायरेक्ट करना है, तो आप 6 मंथ या इवन 6, 7, 8 मंथ्स पहले ही आप इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दें. मतलब डिफरेंट वीडियोस देख लें यूट्यूब्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट फेसबुक पे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, इवन मेन वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी. तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस कंट्रीज़ में या दूसरे कंट्री में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिग्रीज़ मेरे से रिलेटेड डिग्रीज़ करवा रही हैं, और देन व्हाट काइंड ऑफ scholarships they have, how to apply. So I think so that also will take at least some 2-3 months to absorb that whole information, like okay. And this is really important, because if you'll make some mistake here, like if you'll skip some, let's say, scholarship for whatever genuine reason, but that will impact you later. But later you'll be like, oh, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये भी स्कॉलरशिप होती है या इसके लिए भी अप्लाई कर. जैसे थरो स्टडी उन्होंने करनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल दूं कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए होती है. उसमें इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ भी हैं. इसमें भी एक मास्टर्स के लिए इनकी दो तीन स्कॉलरशिप्स हैं. एक है जो कि जिसको ये जनरल स्कॉलरशिप कहते हैं, एक है जिसको ये शेयर्ड स्कॉलरशिप कहते हैं. सो बहुत से लोगों को कभी कभी शेयर्ड स्कॉलरशिप का पता ही नहीं होता कि वो ये भी है और इसमें क्या प्रोसेस है. वो इसलिए कि आपने इतना एफर्ट नहीं की होती वो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए. हालांकि इट्स वेरी इजी. आपको पहले तो पता हो कि अच्छा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप होती है यूके में मास्टर्स के लिए और पीएचडीज़ के लिए. देन अगर आपको वो पता है तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, वो सारा आपको सब देख सकते हैं. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देन आपको पता चल जाएगा. तो आई थिंक सो. और आल्सो किसी पे अगर तो कोई फ्रेंड वगैरह है तो आप डिपेंड कर लें. बट आई वुड से एट द start solo. Like you should think like it's not, because it's not that hard, you know. Exactly, you have to spend little time. Even to add to this thing, what I did, I follow the same thing. और मैंने जैसे कि जो आपने बोला बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, they don't know that okay we are applying for this particular scholarship, then there is shared scholarship as well. So what I did when I was applying for these things, so I prepared an Excel file. In that Excel file, I in the first column I mentioned the country name. Okay, this is country, and then the second column, okay, so for this particular degree, these are the best universities. Yeah. In the third column, okay, now to get into these universities, what kind of scholarship available are? Yeah. And then getting into those scholarship, and then like this how I'm making columns and dividing all the specifications, eligibility things, what I'm matching, what's the deadline. So I think by that way I had a proper format, जिसकी वजह से I think काफ़ी मैं क्लियरली अपनी चीज़ों को समझ पाया, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, सारे ऑप्शंस क्या क्या मेरे पास है. Exactly. And I think if students do like this way, I think they can get to know about and then more of these things. you जो कि आप मोटिवेशन एक स्टार्ट पे होती है ना कि आपको ये चीज़ करनी है. इवन कोई जॉब भी अगर आपको ढूंढनी है तो वो मोटिवेशन भी आपको लूज़ नहीं करनी चाहिए. क्योंकि कभी कभी आप स्टार्ट पे 1-2 दिन तो इन्फॉर्मेशन ढूंढने पे लगाएंगे, फिर आपको वो बोरिंग सा प्रोसेस लगेगा. तो आई थिंक सो आपको मोटिवेशन भी साथ साथ रखनी है कि नहीं, इट्स ओके, लाइक इट्स जस्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट दैट हार्ड. यू हैव टू स्पेंड लिटरली यू हैव टू स्पेंड लाइक few minutes like in one day and for 2-3 weeks. Yeah. It's okay. So ये तो एक हो गया ओवरऑल तरीका कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं. नाउ अगर हम एक जनरल लेवल पे बात करें कि लेट्स सपोज कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा है अपनी कंट्री में और ही इज़ प्लानिंग फॉर मास्टर्स और पीएचडी बोथ. एक जनरल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस कि हाँ उनके पास ये सारी चीज़ें हैं तो यू कैन अप्लाई. और उसमें कुछ ऐसे केसेस अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि यू विल गेट एनी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स. तो अगर हमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना हो जनरल लेवल पे, जब बहुत स्पेसिफिक ना हो, जिससे बच्चे एक चेक कर सके कि हाँ इन पॉइंट्स की वजह से मैं आई एम एलिजिबल. सो what those criteria could be? I think fully funded scholarships देखें तो, क्योंकि वो एक तो fully funded है, वो हर चीज़ आपकी कवर करेंगी. तो given the fact कि वो हर चीज़ कवर कर रही हैं, then it's you can see like they're gonna be competitive, so that's for sure. फिर ये है कि कितनी competitive होंगी, तो फिर वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है एक जनरल क्राइटेरिया का कि एक तो आपका एटलीस्ट अबव एवरेज कुछ मार्क्स वगैरह हों,
एटलीस्ट कुछ अच्छा सपोज करें, एक वेरी नाइस प्रोफाइल हो. ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर ही हों. लाइक यू शुड हैव लाइक वेरी हाई मार्क इन योर क्लास, बट अगर थोड़े से एवरेज से थोड़े ऊपर ही होने चाहिए, क्योंकि आप लेकिन कुछ फिर वहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आई थिंक गिवन द फैक्ट कि वो बहुत competitive होती हैं, एक अबव एवरेज काइंड ऑफ प्रोफाइल हो आपकी, तो दैट्स ओके. लाइक no need to be really good in academia, but it's a mix of like academia and other things as well. Like you can balance it. Like if you have little bit low GPA or marks, then you can balance that with something other activities like you in extracurricular activities, seminars, or some other things. Yeah, because I think when I was doing other interviews, so I've seen this thing, like even students ask this question quite often, कि they think they don't have exceptionally higher grades in their undergrad, so they won't be applicable to apply. Like they think if they have like 8 CGPA, 9 CGPA, then only they can apply. But it's actually not true. Yeah. Even like if you have like 5, 6 CGPA, then also you're eligible to apply. But at the same time, as you mentioned, कि आपको उस चीज़ को कुछ ना किसी सप्लीमेंट करना पड़ेगा. कि ठीक है, आपके पास मान लीजिए ग्रेड्स उतने बेटर नहीं रहे हैं, लेकिन आपने साथ में कुछ और भी चीज़ें करी हैं, which makes you a different candidate there. Yeah, so, above average I would say. It's okay. Above average, yeah. तो जो आपके परसेंटेज हो गए, जो मार्कशीट्स हो गए, ये तो हो गए जनरल. वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे बच्चों के बड़े क्वेश्चंस आते हैं, वो बड़े डरते हैं इस चीज़ से. वो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, एंड दैट इज़ द इंग्लिश एफिशिएंसी स्कोर, जो आइल्स और टोफल्स एग्जाम्स होते हैं. तो बच्चे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने आइल्स एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्या उस बिना उसके हो सकता है? हमने टोफल्स नहीं दिया है, क्या बिना उसके हो सकता है? तो पहले तो बच्चे से घबराते बहुत हैं कि हमें आइल्स एग्ज़ाम देना ना पड़े, बिना उसके हो जाए. तो इसमें भी दो पॉइंट्स हैं. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में विच दे कैन एक्सेप्ट यू विदाउट आइल्स. कुछ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं हु विल नीड आइल्स. जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, जैसे कि जब मैं अप्लाई कर रहा था अपनी PhD के लिए, देयर वर सम यूनिवर्सिटीज़ विच डिडंट आस्क फॉर आइल्स जस्ट बिकॉज कि इंडिया में एक बोर्ड होता है ICSE बोर्ड. ICSE बोर्ड इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन यूके कॉल्ड GCSE बोर्ड. सो अगर आपकी स्कूलिंग ICSE बोर्ड से है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉट ऑल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर ओके टू एक्सेप्ट. ओके, अगर आपने इस स्कूल से पढ़ाई करी तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन सम यूनिवर्सिटीज़, ऑल्दो आई एम फ्रॉम ICSE बोर्ड, दे स्टिल आस्क फॉर द आइल्स को. सो अब बच्चे कितना मेंटली प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए कि उन्हें आइल्स देना है नहीं देना, कितना इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? खैर, ऑलरेडी यू मेंशन के इट्स अ मिक्स. लाइक ज़्यादातर कुछ जगह पे आपको एटलीस्ट एडमिशन के लिए नहीं चाहिए होगा, या फिर एडमिशन के लिए क्या पता आपको बहुत थोड़ा स्कोर चाहिए होगा. लेकिन आई थिंक एज़ फार एज आई एम अवेयर, लाइक यूके में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए तो आपको चाहिए ही होता है. तो एट द एंड आपको कोई ना कोई इंग्लिश या फिर सो यू आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट वीज़ा अगर आप यूके के. ओके, सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर about India, but yeah, students can check, or we can check and we can put on the link. Yeah, so if there's a condition, then they have to definitely do it. Yeah, and just on the same line, like लोगों को थोड़ा सा वो I can see, because even I came from a very like not Average. like every background and all those things. घबराने की ज़रूरत नहीं है. It's just a test. और आप इवन एक के बजाय 2 दफ़ा भी दे सकते हैं. एंड इट्स जस्ट अ लैंग्वेज टेस्ट. ज़रूरी नहीं है, हमारी एक डिफरेंट लैंग्वेज है, हर एक की अपनी मदर टंग होती है. दैन मे बी दे नो सम अदर लैंग्वेजेस. सो दिस इज़ आल्सो जस्ट अ लैंग्वेज. दे शुड ट्राई और 1-2 टेस्ट दे लें. लाइक और यू नीड आई थिंक सम 6-7, एंड देन व्हेन यू विल कम हियर, when you have to speak with people, you can really improve. It's not like a rocket science. English is like just you have to speak and then you can improve it. But yeah, I think, for example, if like there are countries, Commonwealth countries, जहाँ पे English जो है उनकी national language है, first language. हालांकि वो थोड़ी सी different English है. वो एक ये उनका अपना version of English है. It's not like they have like a same similar English, to what you speak in UK. Yeah, in UK or US. तो क्योंकि उनकी वो नेशनल लैंग्वेज है, उन्हें वो आइल्स नहीं देना होता. या आई थिंक दैट्स व्हाट उनकी ये नियम है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो ये आपको देना पड़ेगा. फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको. लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए. यू कैन जस्ट ट्राई. लेकिन आपको लगता है कि नो आई डोंट वांट गिव, देन
try to find some other countries because I think और भी countries हैं जहाँ पे आपको मेरा ख्याल वीज़े के लिए भी IELTS वगैरह नहीं चाहिए। But at the same time, जैसे कि अगर हम let's say चाइना, जापान, कोरिया और किसी यूरोपियन कंट्री की बात करें, क्योंकि when I was applying for my PhD, I remember very distinctly that it was mentioned, let's suppose in Japan, that the PhD research was for 3 or 3.5 years, लेकिन एक्स्ट्रा 1 ईयर लगेगा मुझे वहाँ की लैंग्वेज सीखने में। या तो सो दैट डजंट मेक सेंस कि आप मान लीजिए ठीक है आप जापान जा रहे हैं या कोरिया जा रहे हैं, पहले आप 1 साल उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें रिसर्च कर रहे हैं। बल्कि इंग्लिश तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में एक सेकंड लैंग्वेज हमेशा से रही है। लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़े हेजिटेंट होते हैं लोग कि टेस्ट देंगे, वो फ्लुएंसी में और हमारे यहाँ लोग कमी निकालने वाले बहुत लोग होते हैं कि आपने गलत इंग्लिश बोली तो सामने वाला कमी निकालेगा, तो उसमें आप में तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो अगर आप ये सपना देख रहे हैं, आपको बाहर पढ़ना है, तो आई थिंक उस केस में UK, US जैसी कंट्री में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, और नहीं आ रही है तो वो टेस्ट के लिए करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने टेस्ट के दौरान आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 वीक ऑन YouTube। दे आर प्लेंटी ऑफ वीडियोस, प्लेंटी वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, उसमें तैयारी करिए और यू विल इजीली डू इट। और उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट भी इस कोर्स को लेके अलग अलग हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6 स्कोर चाहिए, किसको 6.5 बैंड चाहिए, किसी को 7 चाहिए, किसी को 7.5 बैंड चाहिए। तो आई थिंक इस टाइम पे भी स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सा बैंड उनको चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर करें वो। आई थिंक ओवरऑल अगर सपोज करें, जैसे मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो आई थिंक इंजीनियरिंग में ना अगर आपका ओवरऑल आई थिंक 6.5 या 6 आ जाता है, तो आई थिंक सो यू कैन कवर लिटरली सो लॉट ऑफ कोर्सेज। आई वुड से मोर देन 80% ऑफ कोर्सेज इन द UK। लेकिन वही बात आ जाए, थोड़ा सा मे बी इट कैन वेरी आल्सो फॉर फ्यू अदर कोर्सेज एज वेल। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन आई वुड लाइक टू पुट ऑन हियर कि अगर कोई स्टूडेंट मास्टर या PhD के लिए पढ़ना आना चाह रहा है UK, सो व्हाट डू यू थिंक द चांसेस ऑफ गेटिंग फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप इज हायर फॉर मास्टर स्टूडेंट्स और इट्स हायर फॉर PhD स्टूडेंट्स? वेल I would say it's my personal point of view, like masters, but फिर भी depend करता है। I think so still so many factors, like it's not only profile, I would say it's luck as well. Would you say कि master students ज़्यादा हैं compared to PhD, इसलिए वहाँ पे competition ज़्यादा है? Do you think so? नहीं, लेकिन फिर उसमें scholarships भी ज़्यादा हैं। Okay. हाँ, तो इसलिए maybe there you have maybe like वहाँ पे आपको 2-3 स्कॉलरशिप कंट्री लेवल की भी मिल जाएंगी, अपने कंट्री की भी मिल जाएंगी, देन मे बी यू कैन फाइंड आल्सो यूनिवर्सिटी लेवल स्कॉलरशिप। बट PhD में योर स्कॉलरशिप आल्सो लाइक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स वो भी कम हो जाएंगी। तो बट लाइक ओवरऑल स्टिल इट डिपेंड्स, आई वुड से लाइक सो मैनी थिंग्स, बट मास्टर्स प्रोबेबली आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक? I mean, I think at the same time it depends on किस स्ट्रीम में आप, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम ऐसी हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स मास्टर्स में भी मिल जाएंगी, PhD मिल जाएंगी, बट एट द सेम टाइम सम स्ट्रीम्स ऐसी हैं कि उस डिसिप्लिन से आपने पढ़ाई करी है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसमें स्कॉलरशिप्स मिलना। सो दैट्स आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रीम एज वेल, इट्स वेरी चैलेंजिंग। और हम इधर फुली फंडेड की बात कर रहे हैं, पार्शियल की आप बात करें तो वहाँ फिर आपको मास्टर्स में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन PhD में आपको वो पार्शियल वाला भी कम ही अपॉर्चुनिटीज़, मुझे तो नहीं है सच का इतना आइडिया कि आपको PhD में या तो आपको फुली फंडेड कोई प्रोजेक्ट या फिर स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर यू हैव टू डू सेल्फ फंडेड PhD। लेकिन मास्टर्स में बहुत आपको पार्शियल लाइक 20% ऑफ लाइक समथिंग लाइक दैट। इवन इन मैनचेस्टर नाउ दे स्टार्टेड कि बैचलर अगर आपने मैनचेस्टर से किया हुआ है तो आप अगर कंटिन्यू मास्टर्स करना चाहते हैं यहीं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा फीस में। ओके, गुड। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर ये तो स्टूडेंट्स को पता चल गया कि हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आई थिंक जो बहुत ही फेमस है लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत करते नहीं उस पर, आई थिंक लिंक्डइन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि लिंक्डइन पे स्कॉलरशिप्स ढूंढना कितना एक्सेसिबल है, कितना किफ़ायती है? Yeah, I think LinkedIn similar to other like now like other social media platforms as well like X, Twitter, वहाँ पे भी अगर आप PhD की scholarships की बात करें तो I think so you can try these platforms as well. मतलब यहाँ पे, लेकिन फिर again UK में suppose करें अगर आपको PhD ढूंढनी है तो
I personally will go for, those two. There are 2-3 websites. There are like a Find a PhD website. Yeah. Then there's one, I think, UK Jobs. Jobs Yeah. UK, yeah. So you'll find almost everything on those two websites, and then maybe you can be a little bit more active on X and LinkedIn as well, because वहाँ पे PhD की scholarships जो हैं वो काफ़ी क्योंकि मेन एकेडेमिया से जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो लिंक्डइन पे और ट्विटर वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो आई वुड से यू कैन ट्राई दैट, बट फर्स्ट depending on country there are those nice websites where you'll find everything, because for example in Europe they have one website, I forgot the name, but there is one website where you'll find all the PhD scholarships, even jobs as well, similar to UK where we have these two websites. Yeah. Okay, now at the same point एक स्टूडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ठीक है ये स्कॉलरशिप है, ये यूनिवर्सिटी है, एवरीथिंग, but still you must have seen, like I know this plenty in India and I'm pretty sure that this must be in Pakistan as well, कि एजेंसीज हैं जो पैसा लेती हैं, फिर स्टूडेंट्स के फॉर्म सप्लाई करती हैं, सब कुछ काम करती हैं, और फिर स्टूडेंट्स आके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं. So what do you think, how much help do you need from any of these kinds of agencies, these institute where you pay them and they apply on your behalf and then you get your admission, or you can do it by your own? What do you think? Well, if you have money, then get help. But I would say zero. Like you can do literally everything on your own. Exactly. Yeah, everything your own. So there's no need. And that will help you later in your career as well, because you know how to do stuff on your own. So I would say, like, if you have money you want to spend, then try different agencies. But if you, like, I would even tell to those people who are spending money on agencies, like, try on your own. Like, yeah, exactly. Because that's not a huge task. Nothing. आप UK में पढ़ाई करने की सोच रहे हो, yeah, और आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है, 2 लोग से बातें करनी है, पेमेंट करना है. It's not so a big straightforward deal. yeah. Even for the visa, usually people are like Yeah. so scared, like, oh, maybe they'll They'll reject my visa. It's our agency, stuff like that. It's just simple. It's like a simple application. You are an educated person, like you already have an undergrad degree or something. Literally, or you can get help from your friend rather than going to pay some money to someone else. But like, if you think there is some complex stuff that you cannot understand, then go for it. But I think at the start, try on your own and figure it out. Get help from friends in your circle, and then maybe go like to those options. Definitely. Okay, so now let's say student has arrived in UK. Mm-hmm. From your point of view, like, there was one time when you came from Pakistan all the way to Europe and then you started your study. So hamari upbringing, considering in India and Pakistan, is very different. The kind of society we have been brought up, we have lived, we have seen. And then after coming to UK, so it's a huge cultural change. Yeah. It's like a cultural shock which students get. So how would you say that it's a huge, big cultural shock which remains some impression on you? It takes time to go, or it's become easier after a few weeks? Like, how do you handle it? It depends on your how happy you are to come here. Imagine, like, अगर एक बंदा बहुत खुश है कि for example I'm staying in one city और मुझे एक जॉब मिली है दूसरे सिटी में जो कि मुझे ड्रीम था कि वो जॉब मिले, then you'll be super happy, you'll go, you'll focus on your job rather than worrying too much about like how you'll adjust in that city. So I think if you are really motivated and if you really like have planned, like, okay, maybe I'll go do this, come back, I'll go and then continue there, then you'll be so happy, you'll literally adjust. But still, adjusting is one thing, and then with time you have to face few of these issues, because इतनी बड़ी अगर कुछ आप चीज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते, then you have to face few issues as well, like फ्रेंड्स ने बनाने पड़ते हैं, आपकी फैमिली आपके पास नहीं होती, कभी आपको लोनली फील होता है, then so many those things are there, but you have to see like you took a step that majority of people are not like literally willing to do, because वो अपने एक comfort circle में है. For example, it's very easy for everyone to just stay in a one town or city with the family and with same friends for the whole life. But you are the one, you are thinking very differently and trying to achieve different things. Because life starts after your comfort zone. Yeah.
But still you'll face those issues, but you'll make new friends, you'll adjust with time, you can find a lot of help, and a lot of things are here. But still nowadays in this era you are still connected with your families back home. You can go after 6 months. just imagine like आज से 30-40 साल पहले जब आप दूसरे मुल्क आते थे तो उस समय तो हमारे पास टेलीफोन, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कुछ भी नहीं था. सिर्फ खत लिखा करते थे और वो खत पहुंचने में कितने समय लगते थे. इवन आप जो पैसे कमाते थे वो मनी ऑर्डर भेजने में, तो उनके चैलेंजेस कितने बड़े रहे होंगे. Just imagine. और आज तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं. Globalized world, everything is connected. Yeah, you can go back like after 3 months, after every 3 or 6 months, depending on like how you are handling your money and saving for tickets and stuff. But still you'll face those issues. But again, like, see, you are aiming for something big, so you have to face all. For example, people who'll go to Middle East for jobs and stuff. Why they are going? Because there are good opportunities in terms financially and all those things. And everyone knows they are facing a lot of issues there, like in adjusting. They are away from home and family, but they are sacrificing, you know, like a few stuff for the better good in the future. Yeah, and one of the most challenging thing is the food. Your food changed. And you know, people are so crazy for the food, and when you come to these countries everything has changed, but still people try to manage it. And that's part of the sacrifice. अगर आपको वो जगह जाना है, वो करना है तो. लेकिन आजकल वही बात है, जैसे आपने मेंशन किया कि आपको फूड भी लेट्स से लाइक आपको हर चीज़ मिल जाती है. इवन जहाँ किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, यूके में या फिर यूएस में, so maybe you have to like do a little bit research rather than in your home country. You'll go anywhere, you'll get the stuff. But here you have to just do a little bit research if you want like something specific, but you'll find it. But it's not like you cannot get anything. I'll tell you one instance. जब मेरे parents आए हुए थे UK में, and there is one worldwide, you must be knowing that worldwide store, and we were there, and you won't believe that when my parents were there, they were looking for the stuff in the market, and there were so many things that they were like कि ये चीज़ इंडिया में आज से 10 साल पहले मिला करती थी, अब नहीं मिलती. And they used to get it here. So I mean, if you'll find it. So there is no issue. But sometimes like making new friends, adjusting in a new culture, but also no one is asking you to adjust in a new culture. You can keep your culture and continue that. You'll find community. Like that's what the coexistence is. But respect others' culture and just enjoy. But yeah, exactly. That's very good. So I remember you told that you also worked in Pakistan before, after your undergrads or something. So there was a lifestyle of working, and now when you come to UK, and now at the moment you're working as well. So you know, nowadays this very fancy concept has came around work-life balance. Yeah. So you have seen the work life in Pakistan. Now you're working in UK here. So what do you think? This work-life balance, how was it in Pakistan? How was it in UK? Is it very challenging here, or it's a lot easier? How would you say that? First, like हम यहाँ पे accept कर रहे हैं कि there is something called work, because उस पे भी debate हो सकती है कि because sometimes if you have your own company, maybe you have to literally do hard work. So it's not like you can just work like 5 days a week, because you build that whole thing like after a lot of time and struggle. Then literally you won't think about 9 to 5 work. You'll do a little bit more. But given the fact, let's suppose like we have to do this work-life balance because we are working in someone else's company and stuff. And then definitely like Pakistan if I'll compare Pakistan with UK or some other developed country, because Pakistan still that thing is not there. People, they don't think like there is something called, you know, like you have to give proper time to family. Also, you can face some mental issues as well. I mean, this mental health thing is very, very new to our people there back in there. यहाँ पे बहुत time से है, लेकिन वहाँ पे हमारे यहाँ कभी इस चीज़ को acknowledge नहीं करी गई. Acknowledge, तो उसकी वजह से बहुत से मतलब issues हमारी side पे, and then I would say like not everywhere in whole our side countries, but few places पे it's very toxic environment there in our side. Few companies में people like you know, like it's very hard. There is a lot of politics, but here I think you'll find at least still, let's say like same kind of environment we have here also, but you'll find a sport also. So you won't find a sport there. So would you say कि वहाँ पे जो कंपनियाँ जो harass कर रही हैं, जो
टॉक्सिक बिहेवियर एनवायरनमेंट है वहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे अगर है भी तो लोगों को अपने राइट्स ज़्यादा पता है, तो इट्स मेक इट लॉट इजियर and टू वर्क. sport is there, and then like there are like people, at least you'll find there are people who'll talk with you like once a while to just check like how you're doing, everything is okay, and then people will insist you to take like a break, and like just take your holidays, and it's really important to do all those things. Then they'll take time off, they'll do like team building. It's very different environment, I would say, if you'll compare with Pakistan. So yeah, I think and I think that's one of the reason even people, those who are working back in India or Pakistan, so they also plan to have a job in foreign country, and they apply for it because they have seen the environment there, and they get to hear about the kind of environment people have here. So I think not only for education, people like to come here for job as well. Okay, when we are talking about this job thing, so what do you think, if you have a degree, maybe it could be an undergraduate, a postgraduate, or a PhD degree in UK, so the chances of getting a very good decent job not only in UK but outside of UK, how much is it like accessible or possible? And to add to that, also getting job back in our country, like if you have a degree here and now you want to go back to country and do job there, what do you think, how easy is it and how accessible it is? As compared to like if your whole education is from your home country, right? So suppose like आपकी सारी पढ़ाई वहाँ पे हुई, फिर बाद में यहाँ पे आप, I think definitely better, no? It's like definitely, because you're doing something very different than what a typical person or everyone is doing. So I think it will improve. Even अगर आप सपोज करें पाकिस्तान की भी बात लें, तो वहाँ पे भी लोग जो हैं nowadays, like you'll find in almost every company, even government or private, like there are a lot of people who had like degrees from a broad master's degree at least. So I think even back home opportunity आपकी improve होगी, like because of like this different degree, or also यहाँ पे, and then also country पे भी depend, I think university पे भी depend करता है कि आप अगर कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है उस फील्ड में, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी काफ़ी एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है वो इंडस्ट्रीज़ में उनके लिंक्स की वजह से काफ़ी अच्छा होता है. But overall, I would say it will improve like everything if you have some education from different countries. Like, so do you think students after studying in UK, they are preferring going back to their countries for doing job, or it's very less, or it's like in very exceptional cases? Depend करता है. I think क्योंकि पिछले अगर हम कुछ साल देखें तो जब से ये ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम आई है, जो कि आपको मास्टर्स के बाद 2 साल आप उस वीज़े पे रह सकते हैं इधर और जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. आई थिंक सो स्टार्ट पे तो काफ़ी लोगों ने वो यूज़ किया, लेकिन देन आई थिंक सो नाउ मे बी इट्स लाइक लिटिल बिट डिक्लाइनिंग, आई वुड से, बट इट विल इम्प्रूव होपफुली इन द फ्यूचर एज वेल. बट इट डिपेंड्स. Majority, what's your mindset when you started, when you came here? आप क्या सोच रहे थे? क्योंकि इवन जब मैं भी मास्टर्स कर रहा था पहला, तो मेरा प्लान यही था कि मैं वापस जाऊंगा. Then things can change also for whatever reason, like you'll be like, okay, let's try here. But you have to remember, like everyone can understand that thing. Like if you have to stay here and do, definitely it's now you're putting yourself in more difficult stuffs. For example, you came already here, did your degree, now at least, okay, that's done, let's go. But अभी आपका प्लान है कि जॉब ढूंढते हैं, जॉब करते हैं, then maybe later settle भी इधर हो जाते हैं. So again, there are so many things that you have to do, and it's not an easy path. But at least you'll get like a lot of benefits out of it. And those who are going back, are they getting hike? Like is there any kind of hike in the job which were they doing initially? मतलब वहाँ की countries प्रेफर कर रही हैं कि अगर आपकी बाहर से पढ़ाई है तो आपको ज़्यादा एक प्रायोरिटी. लेकिन एक टाइम आएगा सैचुरेट, आई थिंक सो हो जाएंगी. और इमेजिन करें एक कंपनी है, उसमें 100 लोग हैं, उसमें से अगर 50 लोगों ने बाहर से मास्टर्स किया, तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक सो they'll get used to it, and they'll treat them like, maybe they'll expect more. They'll be like, okay, now you have to do PhD, then we'll consider at least a little bit seriously, because but now definitely at least एक hype है. लेकिन आई थिंक एक टाइम आएगा कि ये सब कुछ जो है ना वो सैचुरेट हो जाएगा, और देन दे विल बी लाइक ओके, एवरीवन कैन गो. So
So even in my case, I've seen quite a few people from India जो वापस वही गए हैं जिनके कुछ फैमिली कंपल्शंस थे, मैरिज थी, कुछ क्लोज फैमिली जो चाहती थी कि नहीं बच्चा बाहर ना रहे. वरना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, कलीग्स, व्हाट आई हैव सीन, दे प्रेफर टू स्टे हियर, वर्क हियर. और अगर जो यहाँ नहीं भी रहे तो दे हैव वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, लाइक दे वेंट टू लाइक US, Australia, New Zealand. So very few were there who went back to India. Yeah. I think at the same time they feel that the kind of opportunity they have here they might not get there. Yeah. At the same time, the kind of growth they are having here they might not get there. Yeah. At the same time, the amount of money they are making here they might That's not true. get there. Yeah. So ये Exactly. सारे efforts, points एक साथ मिला के फिर उनको वो decision लेना पड़ता है. Decision लेना पड़ता They है. try to stay here Yeah. most of the cases. लेकिन फिर भी आपको एट द एंड ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आप वापस भी जाते हैं, मे बी नॉट नाउ, मे बी योर प्लान इज ओके, आई विल वर्क इन सम अदर कंट्री फॉर 20-30 years एंड देन आई विल गो बैक, एंड पीपल डू दैट. सो वो भी मतलब कोई भी, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी ऑप्शन जो है वो बुरा है, लेकिन यू हैव टू सी योर ओन stuff, your scenario has and then you can just like choose one. Everything is okay. As far as like you're like planning it and you are like thinking like, okay, I want to achieve that thing. And that's really important, I think. Like you have to do that. Like you cannot just blindly, oh, everyone is doing masters, so I'll also do masters from abroad. No need of that. Maybe you don't need. Maybe you are literally good at something else. You will open some company and you can earn. If you it's can do really good there. If it's about money, like maybe you have some other skill and you can just open your own company. Or nowadays, like there are opportunities in all the countries. So that's why my like suggestion or point of view is like people have to really think before doing everything. Just don't do masters because everyone is doing. If you think that can benefit you in the long term, then do it. And at the same time, like going back this thing, I've seen people, those who have not went back, they brought their families here. Yeah. अपनी spouse, अपने partner, अपने parents, even their parents को यहाँ पे ला के रखा और बहुत आराम से रह रहे हैं यहाँ पे वो. तो yeah, I think it's like personal choice. आप वापस जाना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, आपको कौन सी lifestyle ज़्यादा अच्छी लग रही है. It's definitely a personal choice. Now coming back to this thing. So okay, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, 2 potential visa आपके पास है, एक student visa, एक work visa. Now also I've seen students ask these questions like sometime if they get any scholarship, after scholarship के बाद क्या उन्हें वापस जाना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा. And there most of the time the question is कि what if I want to stay here? How I can stay? तो एक ओवरऑल व्यू अगर बच्चों को मिल सकता है इस चीज़ के बारे में कि कितना टाइम उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा के बाद, या स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे. तो यहाँ पे अगर उनको PR चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, या एक ILR होता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो वो चीज़ें कैसे मिल सकती हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट वीज़ा. सपोज करिए कोई एक स्टूडेंट आया यहाँ पे अपनी PhD करने, उसकी PhD 3 से 3.5 साल 4 साल की है. तो इफ़ दैट पर्सन वांट टू स्टे, व्हाट ऑप्शंस दैट पर्सन हैज़ गॉट? PhD पे या मास्टर्स? PhD पे. लेट्स स्टार्ट विद PhD फर्स्ट. सो PhD पे डिफरेंट ऑप्शंस है. एक तो ऑप्शन वही है जैसे मास्टर्स में ग्रेजुएट वीज़ा है कि आप 2 साल का एक ग्रेजुएट वीज़ा ले सकते हैं और उसके दौरान आप जॉब ढूंढ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं. एंड देन तो ये ग्रेजुएट वीज़ा कोई भी ले सकता है, जो भी अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट करने के बाद. हाँ. और अगर PhD कर रहा है और अगर आप PhD कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वो ग्रेजुएट वीज़ा 3 साल का आपको मिलता है. तो उसके दौरान आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं, जॉब कर भी सकते हैं. एंड देन मे बी व्हेन यू आर इन द मार्केट लाइक वर्किंग इन इंडस्ट्री लेट्स से, वहाँ पे क्या पता वो आपका वीज़ा जो है आफ्टर ये वाला वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाता है, या आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं. मे बी दे विल गिव यू वर्क वीज़ा. तो अगर वो वर्क वीज़ा में चेंज हो जाता है, then on work visa if you can I think stay for 3 years or 5 years then you can get ILR. I think it's 5 years. 5 years, yeah. तो अगर आप ये और PhD में आई थिंक ये ग्रेजुएट वीज़ा 3 साल का वर्क वीज़ा 3 साल का मिलता है. उसके बाद आपको फिर 2 साल और कोई स्पॉन्सरशिप की जॉब लेके रहना पड़ेगा, तब आपके जब 5 साल पूरे होंगे. लेकिन ये जब ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है जो कि मास्टर्स और PhD के दोनों को मिलता है 2 साल का और PhD को 3, ये काउंट नहीं होता. ये काउंट नहीं होता है. तो आपको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप वाली जॉब अगर आपको मिली है यहाँ वर्किंग वीज़ा पे, वर्किंग वीज़ा, उस पे अगर आपको 5 साल काम करना पड़ता है, then you can get ILR and then you can apply for the British passport. Okay, but there is one more way.
And that way is if you marry someone British here. So what do you think about that? Because we have seen quite few students here जो यहाँ पे पढ़ाई करने आए and then they're married to British national and they got the PR, I think, permanent residency they get. So like, is it like very eventual process? You get it immediately or it takes time? I'm not aware. This is not my specialty. I mean, I think your it's friend must have done. I am pretty sure. I think it's a personal choice. So if you think that way, okay. Well, then again, see, your goals are different. You're not here for masters and education or doing some other entrepreneurship work or stuff. But if you can see like you wanna go this route, like okay, you can do that. But I mean, again, same time, you know, what if you fell in love? And if you fell in love, then you might find someone and then you want to stay. Yeah. That's the case, isn't it? Yeah. Then also in the. That's why I think, given this like last point, I think you shouldn't think too much about all these things. You should plan, like either you wanna stay in some country or you wanna go back home into your home country. As far as like you set your goal, just do your best and you will get something, you know. Don't worry at the very start, like, okay, how things will work, what visa I'll get. I think so there's no need. As far as you have some goal and you are trying your best to do stuff, I think you'll get it. And maybe on the same like path, you'll get in love with someone and get married. And then, get married. So that's also possible. Yeah. So you just plan your goal rather than, thinking from very start to just settle and use education for that. I think so that's not really good. Yeah, that's not make sense. Definitely. Yeah. Okay. So now, अभी एक dynamics जो बहुत change हो रही है countries के बीच में, and I think students should know about these things because if you are planning to apply for education in foreign university, let's say Indian students बहुत सारे ज़्यादा amount में जाते हैं Canada पढ़ने. Now the relationship is not very okay. So because of that, now there is a sharp decline in student going. So in that context, if we talk about like India-UK relation, Pakistan-UK relation, so that has always been really good. And I think that because of that, the student exchange रहा है वो हमेशा ज़्यादा ही रहा है यहाँ पे. So what do you think? Like जब कोई student apply कर रहा है, forget about UK, let's say in a different country, how important this parameter should be in their mind, looking at how the relationship between their country with that country is there. What do you think? Because even, I'll tell you one more instance. A lot of medical students from India, they go to Central Asian countries for their MBBS degrees. Like all these Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, and then some goes to Russia and Ukraine as well. And when this war happened and all those students have to come back and the government came in between and they evacuated all the students. So they didn't know that these things can ever happen. Yeah. So I think if students start planning when they're planning for their high studies, if they keep these parameters in mind as well. So I think that's going to make a difference. Really, what do you think about it? Yeah, I think it's really important. Again, like, what we discussed before, like, you're not choosing a very straightforward path that everyone is choosing. So I think these kind of things you will face. So you have to be like prepare होना चाहिए इस तरह के situations के लिए. But even for the Canada thing, like, I think other than this relationship between countries, I want to highlight that, like, policies as well, because countries have their policies, like, okay, we want international student, how, like, they have their targets as well, like, okay, we need internet. A time will come, this is like what I think, जब imagine like in future एक time पे एशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ जो अभी हैं वो काफ़ी ऊपर आ जाएंगी रैंकिंग वगैरह में या रिसर्च में, एक टाइम आएगा, या फिर एटलीस्ट अगर वो ऊपर नहीं जाएंगी एटलीस्ट वो लेवल पे आ जाएंगी यूके और यूएस, देन थिंक लाइक व्हाट विल हैपन देन. So I think even like relationship, but you have to see like all these different policy scenarios, what's going on in the countries. But then again, these things are there. You cannot do anything. So, but because if it's good, because I know, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं and then you get to know कि अच्छा अभी आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, जॉइंट कोलैबोरेशन स्टार्ट किए हैं, जैसे कि आई नो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूके दो collaborate with IITs in India. Yeah, even Manchester University. Even University of Manchester has done a lot of collaboration with the IITs. So in that case, if you're having a really good term, then that can really help your studies. Yeah.
सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट कि वो अपने दिमाग में इसको रखें जब वो अपनी Yeah. फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं कि हाउ द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन इज गोइंग, बिकॉज इवेंचुअली दैट डिसाइड्स Yeah. एवरीथिंग. लेकिन उस पे ये भी है कि how you'll know कि next 2 years में Yeah, change नहीं exactly. होगा, because it's Yeah, politics, it's- you yeah. never know. I think as far as like उस जहाँ भी आप जा रहे हैं उस country के जो overall environment या overall लोग हैं, क्योंकि I think so that's at the end you should just look at overall people there rather than Yeah. politicians, because things can change after two Yeah, 2 definitely. years, 1 year. International relations So as far cannot as be- you'll see, like overall country is good, their working environment, my community is there, all those things, I think it's good to go if you like some particular university or place. Yeah, definitely, because a lot of students thinks these things ki not only about the government, because people to people relation is also really important. Yeah. Even though if you're doing like a lot of students go to those countries where they're not having very good terms with the countries, but the people to people relations really good. Yeah. And I think because of that, वहाँ पे भी आप जाके पढ़ाई कर रहे हैं और Yeah, students are doing it's really okay. good there. Yeah, it's So, okay. Like I think so you can do like something like that rather than like thinking too much. If you think like okay, you like some particular university, okay, मेरा dream है कि इस university में जाऊँ या इस company में जाऊँ जो कि particular country में है, तो you can just go. I would say it's okay. Things Okay. can change. Yeah, definitely. Hope for the best. Yeah. और जैसा कि आपने बोला कि you haven't choose the very straightforward path which everyone is generally choosing. You have came out of your comfort zone, and when you are out of your comfort zone, you have to brace yourself and you have to prepare yourself for each and everything. It could be worst to worst, it could be good to the best. Yeah. तो ऑब्वियसली या स्टूडेंट्स को मेंटली फिजिकली इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना ही चाहिए, और या आपको वो डेवलपमेंट वो ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहिए, तो सारी चीज़ें तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि ठीक है आप अभी सपना देख रहे हैं अपनी कंट्री में बैठ के कि बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है या नौकरी करनी है या वहाँ की लाइफ जीनी है, तो वो जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वो लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो सेल्फ ग्रोथ होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? I think first self growth होना चाहिए, and then लाइफस्टाइल कम्स विद इट. yeah, then बाकी चीज़ें भी definitely you can see. It's not like अगर you think like overall the environment in that country is good, like maybe working environment or maybe culturally something like is more better than your home country. So I think first you should prefer your personal growth and then definitely look at other things. I think so, mix of both. It should be a mix of both. Yeah. It's And completely. do you think that's how students are working at the moment? वो अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ को उतना ऊपर रख रहे हैं और फिर प्लान कर रहे हैं No. फॉरेन स्टडीज? Yeah, Apparently that's that's not what happening. that's what I mentioned before also. Like किसी को देख के आप कुछ ना करें, because because हमारी साइड पे अभी क्योंकि ये नया एक रिसेंटली 5-6 साल का ये एक ट्रेंड है कि लोग बाहर जा रहे हैं और मास्टर्स की डिग्रीज कर रहे हैं. PhDs आर वेरी फ्यू बट मास्टर्स की काफ़ी, तो लोग देख रहे हैं and then they'll be okay, I'll also go. Don't do that, I would say, like, because maybe you don't even need that degree. Maybe you can do something better without that degree. In your own country. Yeah, in your own country, maybe you can go for work in that country rather than master's degree. So think what you want and then decide rather than just do it because people are doing it. Yeah, makes sense. Even recently, what we have seen in Sri Lanka, like the things were not going with the government, and that time we saw a massive surge in Sri Lankan students going abroad for their studies and things. So I think at that time those students didn't have any options, and Yeah. they thought that that's the only best choice they can make, because staying there they were not having those options there. Yeah, that's fine. Yeah. Yeah, I think that's fine. Like if you don't have any options and then you think that Bilkul. this is the only thing you can improve your lifestyle or your potential growth, then yeah, that's fine. So in your opinion, what would you say, like pursuing higher education in foreign countries and pursuing higher education in your own country? How huge difference it makes? I think so. First of all, both really important. People have to give some importance to education. Yeah. तो लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो आई थिंक
डिफरेंस तो है इवन लाइक नॉट ओनली फैसिलिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ में मे बी in terms of knowledge maybe you'll find someone in UK who is a pioneer of that whole field rather than your home country, but still even in your home country you can find that, but you have to check and you have to do some research, so it makes an impact. yeah I think that's pretty much, we talked about everything in overview, but I think we have a lot of like viewers from India and Pakistan, and we both are from this different countries. So I would like if you tell students about something about your personal life, like from which city you came and all those things. I think if anyone coming from your city, they will be really motivated to see a person from my city is sitting there in UK and doing really good in his career. So like a brief bio about yourself, like you went to in which city for your undergraduates, and then where you did your postgraduate and how you came to UK. So हम मेरी फैमिली जो है वो सरगोदा से है, पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में एक सिटी है, उसमें फिर सरगोदा एक सिटी है, देन उस सिटी में एक गांव है विलेज, उसका नाम मिड रांझा. सो बेसिकली वी आर फ्रॉम मिड रांझा. फिर हम ये रांझा वही जो हम गाने में बॉलीवुड में काफी हीर रांझा, आप हीर रांझा के गांव से हैं. इस तो वहाँ से हम इस्लामाबाद मूव हुए like 20 years ago from now, around 2000. तो इस्लामाबाद में फिर जो इस्लामाबाद के पास एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, टेक्सला यूनिवर्सिटी. तो वहाँ से मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. सो लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते होंगे वहाँ पे एडमिशन के लिए. ये जैसे सपोज करें IIT है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कुछ, और इनका एक 12th ग्रेड के बाद एक एग्ज़ाम होता है. तो उस एग्ज़ाम के बेस पे आप इन यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे अभी ये मैंने आपको मेंशन किया कि ये टेक्सला में, टेक्सला इज़ लाइक वेरी क्लोज टू इस्लामाबाद. इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइक UET, द वे इट्स लाइक इन योर कंट्रीज IIT. तो इसी तरह ये UET एक लाहौर में मेनली है, जो कि सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी है. तो उनकी एक ब्रांच थी यहाँ पे टेक्सला में, बाद में फिर ये यूनिवर्सिटी बनी. तो मेरे अंडर ग्रेड जो है वो UET टेक्सला से है. आई डिड बैक इन 2012-2016. उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की है. इस्लामाबाद में 1 साल जॉब की थी इन्वायरमेंट कंसल्टिंग फर्म में. फिर 1 साल 1.5 year लाहौर में मैंने जॉब की थी, एंड देन आई केम टू लीड्स फॉर माई मास्टर्स. तो आपके अगर पाकिस्तान में कोई खूबसूरत शहर जो आपके काफ़ी करीबी रहा हो, तो आप किसे कहेंगे? Well, Islamabad is really beautiful. Islamabad is very close to you? Yeah. It's not close to me, but it's a beautiful city. Okay, like yeah. I could say for my case. Oh, then like, I will say my my own. If you'll say like hometown, like Midrangja, I will say, because you are like your roots are from there. So if and you speak Punjabi there, right? Yeah, my mother tongue. Yeah, that's cool. So like for me, I would say I come from North India, and that's a very the populous state, UP. Very dynamic state as well. So I come from UP, and that's a very small hometown. It's in a city called Gorakhpur, which is very close to the international border of Nepal. So I grew up there. My parents were from there, and then for my education, I went to different cities. I lived in Allahabad, which is now called Prayagraj. Then I've lived in Dhanbad. Then I worked in Delhi. I worked in Greater Noida, and then I came here. So I would say could share apart from my hometown Gorakhpur, then there's Allahabad, which is very close to me because the kind of life I've seen there, and even when we go to Edinburgh, I go to Edinburgh. So the people, the way celebrate their life in Edinburgh, it's so amazing. It reminds me of these 2 cities in India, like the Allahabad and Banaras. Like if you go to Banaras, it's like 1,000-year-old city. It's 1,000-year-old city. It's called the cultural capital of India. And people are still living and enjoying the life the way they used to do it back like 1,000-year-old. So that's something I see in Edinburgh, and that really reminds me of those cities. Really nice. So it's very emotional for me as well. And yeah, pretty much that's it. So yeah, Adil, it was really a nice conversation with you, and I hope कि students को काफ़ी इससे benefit मिलेगा. And I think अब ये जो format हमने start किया है podcast का, अगर इस पे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शंस को लेके, लाइक इफ़ दे वांट टू नो अबाउट मच मोर डिटेल अबाउट एनी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप,
if they want to know about particular university, and then a lot of things we have to write as in your personal statement when you apply for these things. So if the ऐसी queries आती हैं, I think then we can make more videos on that, and we can help students from India, Pakistan, those who want to come and study here. So thank you very much for your time, and see you soon. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए मैक्स टू मैक्स, और इसकी रीच बढ़ाइए, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर सच वीडियोस. थैंक यू.